Hello my dear students, how are you? I hope you have got your SAT results and you all are satisfied with your marks. Okay, now today we are going to start our syllabus of SAT, and in my last video we have discussed this chapter 7, that was the Microsoft Excel, and that chapter will come in your SAT exam. Today we will do the recap of this chapter because that was about to finish, and today we will do the recap of this chapter, and after that we will do the bookwork and the question answer of this chapter. In my last video we have discussed Microsoft Excel. What is Microsoft Excel? Microsoft Excel is a sheet that is in which we can store the data in the tabular form, and each that are made up of the cells, and cells are the intersection of the rows and the columns. And in this table you can store the data in the form of the rows and the columns, and that is used for doing the calculations. And next topic then in this Microsoft Excel was what are the features of the MS Excel. The features of the MS Excel are that it is used to do the various calculations, mathematical calculations. For doing the calculations you can use the simple formula, plus you can do the complex formula and the simple formula, plus inbuilt functions you can use in it. Next in this, we are in next feature of the Excel I have told you about. In this we can use the different type of the functions that are in some inbuilt functions, and we can use some formulas that we can directly use for doing the for doing the calculations also. Plus in this we can store our data in the tabular form. Next in this there is a autofill feature that is used to automatically fill the numbers in the sequence. Next feature of the MS Excel is that in this we can if you are changing in one cell, then automatically all the formula according to the value of the change cell will be recalculated. So these are some features of the MS Excel. Next we have read about the workbook and the worksheet. Workbook is a combination of the worksheet. Workbook is just like a book, and worksheet are just like the number of the pages in the workbook. In this by default three worksheets are shown in the one workbook, but you can add more and more worksheet in one workbook. Next is the component of the worksheet. There are the various components of the worksheet, like there is a cell, there is the active cells, there are the formula bar, there are the name box, which I have already told you in my previous video. Next is the type of the data. Three types of the data we can store in this. There are three types of the data, like numbers, text, and the functions. First is the numbers in which you can store the various numbers that start from 0 to 9, and the various character and the various special character like plus, multiply, divide, ampersand, all these things. And next there was the text. In the text you can store the words, you can store the combination of the characters, and you can store the combination of the words and special characters. So these type of the text data you can store in it. And the third type of the data in this Microsoft Excel is that was the formulas. Sorry, I have told you functions. That was the formulas. In this formula there are the various type of the operators you can use to perform the various functions. For example, we can use the plus, minus, multiply operator within one formula, and that is known as the complex formula. And some inbuilt functions we can use, like sum. In the sum you can pass the number of the values, and it will give you the result after adding that values. Product you can use to multiply the various numbers. Difference, diff functions you can use to get the difference of the numbers, to subtract the numbers. So these are the some formulas which we can directly use in MS Excel. And next are the performing calculation. In this we can use how you can perform the calculation. For example, if you are using the sum functions and you are passing the value 5, 6, it will do the calculation 5 plus 6 is equal to 11, and in which cell you will use this formula, it will show the result. But formula will always start from the equal to sign. This is the basic
concepts. When you are using some formula or you are using some inbuilt functions, that always starts with the equal to sign in MS Excel. Next is working with the worksheet. जो आप वर्कशीट यूज करते हो, आई हैव टोल्ड यू दैट वर्कबुक इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्कशीट, एंड इन द वर्कशीट देयर आर द वेरियस वर्कशीट्स यू कैन ऐड ऑन. You can rename the worksheet, you can delete the worksheet, you can remove the worksheet. So these are more about the worksheets. And next are saving a worksheet. How you can save a worksheet in it. We can save a worksheet in it. You will save the workbook, and in workbook all the worksheet will be automatically saved. So this was all about this chapter Microsoft Excel, which I had taught you in my last video, and I will also send the link of that video again so that you can refer these videos for doing this MS Excel. And now it is finished. The theory part of this chapter is finished. Now I am going to start the bookwork and the question answer of this chapter. Now these are the answer of your bookwork, filling the blanks, true false and MCQs. Now I am reading the questions, and you can write down the answers in your book. First filling the blanks is by default a workbook contain dash worksheets. अभी मैंने अपने recap के अंदर आपको बताया है, by default a workbook has the 3 worksheet. Next is dash button places the content in the center of the cell across a number of the rows and the column. जो बिल्कुल सेल के अंदर जो आपके डेटा को बिल्कुल बीच में रखता है, उस बटन को हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज द मर्ज एंड सेंटर. व्हेन यू आर मर्जिंग 3 और मोर सेल्स, आपने 2 या 3 सेल्स को मिलाकर अगर एक ही सेल बनाना है और उसके अंदर जो भी आप डेटा लिख रहे हो, whatever you are typing in that cells, and you want to set that in the middle of the cell, then you will use directly, you can use the merge and center button. Next is dash bar shows the data and formula entered in an active cell. एक्टिव सेल में आपने कौन सा फार्मूला यूज़ किया, कौन सी बार ऊपर बताती हूँ. ऊपर 2 बार होती है आपकी शीट के ऊपर, एक नेम बॉक्स और एक फार्मूला बार. देन द फार्मूला विल टेल यू अबाउट द फार्मूला एंटर्ड इन अ सेल. नेक्स्ट इज अ वर्कशीट बिकम्स एक्टिव बाय क्लिकिंग ऑन द डैश टैब. एक वर्कशीट अगर आपने ओपन करनी है, नीचे 3 वर्कशीट्स ओपन है या 4 वर्कशीट ओपन है, आप 4th में वर्क कर रहे हो और आपने डायरेक्ट सेकंड में जाना है, तो आप किस में जाके क्लिक करोगे? आप उस शीट में जाके शीट 2 में जाके क्लिक कर दोगे. देन यू विल दैट शीट विल बी एक्टिव. देन हियर वी विल यूज द शीट. नेक्स्ट नेम बॉक्स इज प्रेजेंट अबव द डैश हेडिंग्स. ये रोज है, ये आपके कॉलम्स हैं. कॉलम्स के ऊपर ही आपके लेफ्ट हैंड साइड पर नेम बॉक्स होता है एंड राइट हैंड साइड पर फार्मूला बार होती है. देन विच इज अबव द कॉलम हेडिंग, दैट इज द कॉलम बार. नेक्स्ट द डैश बटन टू द लेफ्ट ऑफ द टैब शीट्स लेट यू मूव थ्रू द वर्कशीट क्विकली. एक से दूसरी वर्कशीट में आपने जाना है तो आप क्या यूज करोगे? हम टैब यूज करते हैं. देन हियर यू विल यूज द टैब स्क्रोलिंग. नाउ प्रेसिंग द डैश की ओपन्स द सेव एज डायलॉग बॉक्स. किस की को प्रेस करके आप सेव एज डायलॉग बॉक्स को ओपन करते हो? वी यूज द F12 की वी कैन यूज. क्लियर? These are all about your filling the blanks. Next are your true and false. Microsoft Excel is the most suited program for documentation. Yes, that is the most suited program for the documentation. Next is a workbook can contain any number of the worksheets according to the user needs. हमने बोला था हम कितनी भी बाय डिफॉल्ट 3 वर्कशीट्स है, बट हम कितनी भी ऐड ऑन कर सकते हैं, तो दैट इज ट्रू. दैट हम अपने यूजर अपनी नीड के अकॉर्डिंगली और भी वर्कशीट्स को इसमें ऐड ऑन कर सकता है. नेक्स्ट लेटर A to Z, AA to AZ आर द रो हेडिंग. दैट इज फॉल्स. रोज आर इन द फॉर्म ऑफ द 1 2 3 4 5. कॉलम्स आर इन द फॉर्म ऑफ द ABC, सो दैट विल बी द फॉल्स. Fourth is status bar includes the name of the currently selected command or the current activity. Yes, status bar आपको पता है, कोई भी आप एप्लीकेशंस ओपन करते हो तो जो स्टेटस बार होती है उस एप्लीकेशंस के स्टेटस के बारे में हमें बताती है कि कौन सी शीट ओपन है, कौन से सेल में हम काम कर रहे हैं. दैट विल बी द ट्रू. नेक्स्ट इज डेटा कैन नॉट बी एंटर्ड इनटू एन एक्टिव सेल. फॉल्स, क्योंकि एक्टिव सेल वही होगा जिसमें आप काम कर रहे हो, जिसमें कोई डेटा एंटर कर रहे हो या कुछ चेंज कर रहे हो. So that answer will be the false.
Next is arrow button present on the worksheet tab allow the user to switch between the worksheet. Yes, arrow button के थ्रू हम एक से दूसरे worksheet में भी move कर सकते हैं. That will be the true. Now next are your MCQs. So true false is clear. First is true, second is true, third is false, fourth is true, fifth is false, and the sixth is true. Now next is the MCQs. In Microsoft Excel, dash button is used to perform addition of a range in a cell. ऑटो सम करते ही आप जितने भी सेल्स को आपने सेलेक्ट किया है ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू को ये क्या करेगा, प्लस करके आपको शो कर देगा. यहाँ ना तो आपको कोई फार्मूला यूज करने की जरूरत है और ना ही फंक्शन यूज करने की जरूरत है. ऑटोमेटिकली एड ऑन ऑल द सेल्स विच यू हैव सेलेक्टेड. नेक्स्ट, बाय डिफॉल्ट द टेक्स्ट डेटा इज डैश अलाइंड इन द सेल. बाय डिफॉल्ट जो डेटा होता है वो सेल्स में कहाँ पर अलाइंड होता है, दैट इज लेफ्ट अलाइंड. And the third, in a worksheet there are dash rows. एक worksheet में कितनी rows होती है, there are so many rows in a worksheet. Like this is, आप उसको check भी कर सकते हो. There are so many rows in the worksheet. There are 10,48,576. And next is one minute. I am checking something. Just wait a minute. Sorry, I was in doubt कि इतनी है या कुछ थोड़ा सा वैल्यू में चेंजेस है. That is right answer. Next is dash box shows the address of an active cell. नेम बॉक्स, मैंने आपको बताया था नेम बॉक्स क्या बताता है कि किस सेल में आप काम कर रहे हैं, कौन सा सेल एक्टिव है, दैट इज द नेम बॉक्स. एंड next to the name box is the formula bar, that is an active cell which formula you are using, that will show the formula. Next is the formula always starts with the dash sign, formula always starts with the equal to sign. I have already told you. And we can enter dash types of the data in a worksheet. We can enter the 3 types of the data in a worksheet. कौन कौन सा बताया मैंने आपको, एक नंबर टाइप का, एक टेक्स्ट टाइप का और एक फॉर्मूला. दैट इज 3 टाइप ऑफ द डेटा यू कैन एंटर इन द वर्कशीट. नाउ नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन आंसर्स. ये सारे क्वेश्चन आंसर अभी हमने रिकैप में पढ़ लिए. मैं एक बार रीड आउट कर रही हूँ एंड यू कैन लिसन दिस क्वेश्चन आंसर. फर्स्ट इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. तो व्हाट इज द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, अभी आपको मैंने माइक्रोसॉफ्ट की डेफिनेशन भी बताई है और उसके कुछ माइक्रोसॉफ्ट के फीचर्स भी बताए हैं. देन यू कैन राइट डाउन दिस इज द मोस्ट पॉपुलर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द रोज एंड कॉलम्स एंड यू कैन डू द मैथमेटिकल फंक्शंस इन दिस बाय यूजिंग द फार्मूलाज एंड बाय यूजिंग द इनबिल्ट फंक्शन. नेक्स्ट इज डिफरेंशिएट बिटवीन द वर्कबुक एंड द वर्कशीट. वर्कबुक अभी मैंने बताया दैट इज जस्ट लाइक अ नोटबुक एंड वर्कशीट इज अ like a page and workbook is a combination of the various worksheets. Next is what is a cell and how many characters can a cell contain. A intersection of the rows and the columns is known as the cell. और cell में आप कितने characters store कर सकते हैं, we can store in this 32,767 characters you can store in one cell. Next is what is the formula bar and how it is different from the name box. कॉलम से ऊपर 2 हमारे बॉक्सेस है, एक नेम बॉक्स है एंड नेक्स्ट टू द नेम बॉक्स इज द फार्मूला बार एंड नेम बॉक्स विल टेल यू द that will tell you the address of the that will tell you about the address of this address of the cell in which you are working, and the formula bar will tell you about the formula which you are using in the active cell. Next is how many types of data अभी मैंने बताया. We can enter the 3 types of data in it, that is the number, text and the formula. Next is how can you rename a workbook. हम रीनेम कैसे कर सकते हैं वर्कबुक वर्कशीट. सॉरी, how you can rename a worksheet. We will go on the worksheet and we will right click on it. When we will right click on it, then there will be the option that is renaming. When you will click on the rename, it will ask for you to enter the new name. When you will enter the new name, then the worksheet will be changed by your new name. This is the method of renaming a. This is all about your chapter 7. Now I am sending the PDF of this bookwork and plus the question answer of this
unit also. Then you can write down in your book. No need to start from a new notebook. You can use your old notebook also, but please start do your work on time, because कुछ बच्चे बाद में बोलते हैं कि मैम प्लीज सेंड मी द PDF of this chapter, and it's not possible for me to send each and every child according to his or her requirements. It's your duty when teacher is teaching you, and it's your duty to complete your work simultaneously. So it's my request to all of you, please do your work. I am sending the PDF of the book work plus the question answer, and complete your notebook. Thank you and have a nice day.